Welcome to the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center. In 2004, a national level institute AMGITA has been started in the field of engineering and technology as per guidelines of All India Council for Technical Education AICTE New Delhi. AMGITA is approved by AICTE New Delhi, Gujarat State and affiliated to Gujarat Technological University Ahmedabad, which is also known as GTU. Our goal is to be an institute of generative ideas so that we remain relevant to our society. The AMGITA has always been an organization on move with continuous effort on improving its processes and to maintain its relevance to the Indian science scenario, with adding new programs in its programmatic portfolio. We strongly believe in overall development of students, so for that we provide them a different platform like state level tech fest, project fair, different sports activity, which helps students to teach teamwork and problem solving skills to get physical health benefits, boost self esteem, and reduce pressure and stress for prove their skills in distinct area. So, students, welcome to the lecture of electrical measurements and measuring instruments. Myself, Professor Gaurang C. Patel from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. So, students, today we are going to study about the chapter number 3, that is measurement of parameters. Okay, and we will uh, cover these two topics in that particular lecture. Okay, so these are the points to be covered in this lecture. First point, that is explain the methods of measurement insulation measurements, or explain the methods of in measuring the insulation measurements through the मेगर. So ये क्वेश्चन दो तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है. इधर इट इज आस्क्ड बाय द एक्सप्लेन मेगर and how the measurement is measured through the megar or working of the megar. And second, that is the state the limitations of western bridge and define quality factor with reference to inductance. So students, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, स्पेसिफिकली जो क्यू मीटर वाला क्वेश्चन है वो. So these two questions we are going to be covered in this video lecture session. So in first video lecture I will try to explain you this first question in depth, and in second and same uh, same chapter, for the same chapter I will make another video, that is lecture number 2, that in that lecture I will cover this state the limitations of western bridge and define quality factor with the reference to inductance. Okay students, so we will begin with the first uh, explanation of that how the maker is working and how what is the principle of maker. Okay. Okay, now this is the question, that is state the limitations of Western bridge and define quality factor with reference to inductance. So students, first of all we will start with the limitations of Western bridge. So these are some of the limitations are given. So it can, first limitation, that it can only be used to measure resistance in the range of few ohms to several mega ohms only. Hence it cannot be used for high resistance measurement. So सबसे पहले उसका limitation क्या है कि that will on it can be used for the low value of resistance or up to the certain level of mega ohms resistance. Okay, now second one, that is it cannot be used to measure resistance below 1 ohm. While measuring low resistance, the resistance of leads and contacts become significant. It will produce errors in the measurement. ये बहुत ही कम low resistance हो वो भी measure नहीं कर सकेगा. Okay, then third one, that a large amount of current is allowed to pass through the bridge arms. Heating effect take place. जब इसमें से ज़्यादा अमाउंट का करंट पास होगा वेस्टर्न ब्रिज में से तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगी. एंड द एक्सेसिव करंट्स में जनरेट हीट which may cause permanent change in the resistance. Okay, and the fourth जो है, that is the resistance used must be precise, having tolerance up to 19% or 0.1%. Okay, and so the hence cost of resistance increases. So it is defined as the ratio of power stored in the element of the power dissipated in the element. It is also defined as the ratio of reactance of resistance of a reactive element. Okay, sorry. So
Now we will see, it is start over here from the q meters, some of the q meters definition, and we will see the how the working principle of q meter is there. So and here this is the phasor diagram of q meter is given, and this is the circuit diagram you can consider when you explain the q meter. So one by one we will see how it is going to be work. Okay, so students, we will start the working of q meter. So this is the statement, that is working of the q meter is based on the characteristic of series resonance circuit. Now first of all we will see what is the series resonance circuit. In series resonance circuit there is R and C that is connected in series. Okay, now this series resonance circuit has a characteristic that the voltage across the coil or capacitor is equal to the applied voltage times to the Q factor of the circuit. Now students, how it will be going to be work, that I will show you with some I am having some slides of that particular detail with the Q factor operation. So students, you can see over here, this is the principle of working of the Q meter. So first of all, this is, you can see, based upon the well known characteristic of series resonant RLC circuit. ये जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, there is series RLC circuit दिया हुआ है. Okay, so in series RLC circuit you can see this is the resistance R, this is the inductance L, and this is the capacitance C is given over here. And in series resistance circuit, this E is we are considering as an input. यहाँ पे ये जो E जो है वो हमें क्या कंसिडर करना है, एज एन इनपुट हमें लेना है. और ये साइनोसॉइडल का सिंबल दिया हुआ है. हमारा जो सोर्स है वो है क्या है, साइनोसॉइडल सोर्स है. तो हमें एसी सोर्स यहाँ पे सप्लाई में दिया गया है और यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस सर्किट दी गई है. नाउ वी नो दैट रेजोनेंट कंडीशन हम किसे बोलते हैं, व्हेन XC इज इक्वल टू XL. सो दिस इज द रेजोनेंट कंडीशन, दैट इज XC इज इक्वल टू XL. नाउ वी ऑलरेडी नोटेड व्हाट इज XC. XC क्या है भाई, XC का इक्वेशन है XC इज इक्वल टू 1/2 f डॉट c और f 2 f 0 c, जिसमें आपका ये XC का इक्वेशन है और ये XL का. सो XC इज इक्वल टू 1/2 f 0 c एंड XL इज इक्वल टू 2 f 0 l. सो आई होप यहाँ तक आपको इजिली पता चल गया है. नाउ वी विल सी हाउ द प्रिंसिपल ऑफ Q meter working is there. Now over here you can see, that is when you consider XL is equal to XC. Now in place of XL I will just put over there, that is the 2 f 0 l, that is in place of XL. यहाँ पे हमने XL क्या लिया हुआ है, 2 f 0 l, वो हम कहाँ पे रख रहे हैं, ये रेजोनेंट कंडीशन में सिर्फ यहाँ पे पुट की है XL की वैल्यू, दैट इज 2 f 0 l, और XC की वैल्यू दैट इज 1/2 f 0 c. Now if I will take this f0 over here, so it will become f0 square or f0 square, that is f0 square is equal to this 2 pi is going to the denominator, so it will gives you this 1/4 square LC. Okay students, so now your f0, that is f0 square is equal to 1/4 square LC. So with help of that, your f0 you can write down over here, that is 1/2 root LC, क्योंकि ये 4 square का अगर हम उसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, it will become a 2 and LC का क्या हो गया यहाँ पे root LC. So now your f0, that is your frequency, nothing but the frequency, that is equal to 1/2 root LC. Okay, now you can see in that particular equation, for that, for the condition of XL is equal to XC, यहाँ पे अब यह हमारे पास क्या है, इनपुट में ये साइनोसॉइडल सप्लाई दिया गया है. तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे भाई, ये IR. ओके, यहाँ पे ये जो है, अब हम उसका फेजर डायग्राम लेंगे. ओके ठीक है, तो ये पहला, ये जो फेजर डायग्राम है ये I0 का, हमें अब टू कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, एक तो बाय इंडक्टिव XL के लिए और एक XC के लिए. अब जब इंडक्टिव होगा आपका लोड नेचर में, तब आपका वोल्टेज क्या होगा,
इंडक्टिव होगा तब आपका वोल्टेज यहाँ से लीड करेगा, ठीक है। करंट अगर करंट को रेफरेंस में रख रहे हैं तो फॉर इंडक्टिव योर वोल्टेज इज गोइंग टू बी लीड ओवर हियर, एंड फॉर द कैपेसिटिव योर वोल्टेज इज गोइंग टू बी leg over here. Okay, so over here that is for first condition ये हमने I0, okay, ये I0 कहाँ पे है, ये पहली कंडीशन हम कौन सी ले रहे हैं, ये वाली, ये रेजिस्टेंस में जब I0 यहाँ से पास हो रहा है, you can see from this figure, this is the I0, okay, and this I0 is passing through that resistance, okay। ये कंडीशन के लिए सबसे पहले हम ये फेजर डायग्राम कंसीडर करेंगे when your nature of load is resistive, okay। So for when your nature of load is resistive, so at that time your voltage drop for the resistance, it is in the same line with the I0, okay, it is the same line of the I0, so you can just first it will start with this line only if you are consider I0 as your reference current। आपने I0 को क्या रखा है, रेफरेंस के रूप में रखा है, तब आपका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या आएगा, उसी लाइन में अलाइन करेगा। अब आप कंसीडर कर रहे हैं एक्सेल को, ओके। अब आप क्या इफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं इन आपका एक्सेल। सो I0 एक्सेल और I0 एक्सेल कहाँ पे आएगा, आपका इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप कहाँ की कंडीशन क्या होगी कि भाई ये वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। सो फॉर द कंडीशन ऑफ I0 XL this phasor diagram, this will be a 90 degree leading when you are taking the reference as a your current, your voltage is 90 degree leading when you are consider that is I0 XL। now for the capacitive reactance you can see over here for the capacitive reactance student, हम जानते हैं कि हमारा कैपेसिटिव अगर इफेक्ट है तो उसमें वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज I0 XC is taking place over here, okay। so easily from this particular phasor diagram you can easily understood what are the position when your load is resistive, this is the position when your load is resistive, okay, this is the position when your load is inductive, and this is the position when your load is capacitive, okay student। so हम पहले इनपुट साइड का कंसीडर करेंगे, यहाँ पे क्या है I0 into R is equal to E, that is the input is given over here I0 into R that is equal to E, ये इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ओके। यहाँ से ये लाइन में एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ तक, ओके, और ये जो रजिस्टिव ड्रॉप है यहाँ से एक एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ तक, तो फिर मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, that is nothing, our resultant is we are getting that is E into L, okay, this is the EL, that is the resultant I will get, that is nothing but the drop across this resistance and inductance। so स्टूडेंट यहाँ तक आपको पता चल गया ये EL क्या है, that is the drop across this resistance and inductance that we are getting at the input side। तो input side पे हमारा ड्रॉप कितना आ रहा है वो हमें थ्रू द फेजर डायग्राम पता चला, ओके। नाउ वी विल सी फर्दर, वी आर पहले हमने ये सर्किट को कंसिडर किया, ओके, कि भाई आपका I0 है, फिर I0 into R, ये आपका when you are talking about your load is resistive, then when your load is inductive, ये वोल्टेज आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है, when your load is capacitive, ये वोल्टेज आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है, ओके। नाउ हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला कि भाई आपका I0 XL ये इंडक्टर की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और रेजिस्टेंस के वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, that is equal to your input, they are considering where input E is equal to EL, okay। now further if you will see your input voltage, that is nothing but E is equal to I0 R, that is your voltage drop I0 R, okay, your input voltage E is equal to I0 into R, okay। now your output voltage that is equal to EC, और यहाँ पे इस फिगर से आप
मैंने आपको बताया कि आपका आउटपुट वोल्टेज हम कितना कंसिडर करेंगे, ईसी जितना. ओके, सो व्हाट इज ईसी, दैट आई विल शो यू. दैट इज योर आउटपुट वोल्टेज ईसी. आपका इनपुट वोल्टेज कितना है, ईएल, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एंड एल. ओके, so now your output voltage is equal to EC. Now current at resonance, we know that current at resonance is equal to I0 is equal to E by R. Okay, that is nothing but the ratio of input voltage divided by the total resistance, that is the current at resonance. I0 is equal to E by R. Okay, so now if you further given, that is the ratio of EC divided by E, that is the output divided by the input voltage. Now we will see that is the output, that is your EC, and your input, that is your E. Okay, output, that is your EC. Where is your EC? This is your EC, that is your output. We are considering the series resonance circuit, and this is your input. So we are taking here the ratio of output divided by input. Okay, so the ratio of output divided by input. So in place of EC, we can write down I0 into XC. Okay, from this figure we can write down I0 into XC in place of EC. यहाँ पे EC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I0 into XC, क्योंकि EC ये जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और जितना करंट यहाँ से पास होगा ओके XC में से, वो हमें एज अ वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, I0 करंट जो पास हो रहा है इस सर्किट में, और ये जो C, दैट इज योर नथिंग बट द XC. ओके, दैट इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो EC इज इक्वल टू I0 XC, एंड E कितना है यहाँ पे, I0R हमने कंसिडर किया हुआ है कि भाई जितना भी रेजिस्टेंस है इनपुट की साइड पे, उसमें जो भी करंट पास हो रहा है उतना हम वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं. ओके, सो इन प्लेस ऑफ I0 XC आई कैन राइट डाउन I0 XL. हाउ आई कैन राइट डाउन I0 XL? XC की जगह पे XL हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई हमने रेजोनेंट कंडीशन कंसीडर की है. सो XC इज इक्वल टू XL हम ले रहे हैं, तो इन प्लेस ऑफ XC आई कैन इजिली राइट डाउन XC इज इक्वल टू XL. सो फ्रॉम दिस circuit you can see that is XC is equal to XL. Okay students, so for the XC is equal to XL, you can see over here, just a moment. Okay, so that is when this position is come I0 into XL divided by I0 into IL, I0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कौन सी टर्म बची है यहाँ पे, ओमेगा 0L डिवाइडेड बाई L, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो यहाँ पे हम एक्सेल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेल इज नथिंग बट द ओमेगा 0 इंटू एल. ओके, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू एल होता है. तो यहाँ पे एक्सेल की जगह पे हम ओमेगा नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये एक्स इज इक्वल टू एक्सेल, क्यों यहाँ पे हम लिख सकते हैं. नाउ what we are getting over here, that EC by E, that is output divided by input, is equal to omega naught L divided by R. Okay, so over here this is nothing but your Q factor is given. So हमने सबसे पहले क्या किया है कि भाई व्हाट इज Q फैक्टर. ओके, सो वी जस्ट सी दैट क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. आपको क्या याद रखना है क्वालिटी फैक्टर के बारे में, कि भाई क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्सएल, टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. कि भाई आपकी जो भी कोयल है उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है. ओके, उसको मेजर करने के लिए हम क्वालिटी फैक्टर को यूज करते हैं कि आपका कोयल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है. तो उसके लिए हमें क्वालिटी फैक्टर में क्या इक्वेशन हमने क्या कंसिडर किया है कि भाई Q इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय R, और एक्सएल दैट इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय योर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट. So in place of XL you can write down omega 0L divided by R. Okay, now what is the storage factor? That is quality factor is also known as the storage factor as well, and this storage factor Q, that is given by the power dissipated, whatever power dissipated through the circuit, divided by power stored in the element. Okay, that divided by the power stored in the element, and the effective resistance R depends upon the value of frequency. ये effective resistance किस पे consider आप
किस पे डिपेंडेड रहेगी, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। ओके, सो दिस Q इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर, एंड R इज इक्वल टू, अगर आप R को इस तरह पे ले जाते हैं तो R इज इक्वल टू नथिंग बट द एक्सएल बाय Q। सो उससे हमारे सर्किट स्टार्ट होती है, और फिर हमने जो ये डिफाइन किया बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, तो भाई सीरीज RLC सर्किट को कंसिडर करके उसको डिराइव किया कि भाई कैसे ये इक्वेशंस आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि भाई एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कंडीशन पे हमने एक फेजर डायग्राम को कंसिडर किया। ओके, वी आर टेकिंग द consider the phasor diagram, then how the resultant EL will be taking place and how the resultant we will get it over here. Okay, then we are saying that this is the resultant is given, and this is the current at resonance circuit, that is E by R. We already derived that, and that finally this is the equation we are talking about. What we are getting, that is EC divided by I, that is nothing but the output divided by input, that is equal to omega 0 L into R, omega 0 L divided by R. ओके, ये कंडीशन हमने किसके लिए, ओमेगा 0 L by R किसके लिए हमने कंसिडर की थी, क्वालिटी फैक्टर के लिए। ओके, सबसे पहली स्लाइड में क्या हमने किया था, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। एक्सएल की जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा 0 L डिवाइडेड बाय आर। सो सेम वस्तु हमने डिराइव की यहाँ पे, सो वी कैन राइट डाउन इन प्लेस ऑफ ओमेगा 0 L, दैट इज omega 0 L divided by R, nothing but that is your quality factor. Okay, and this is EC by E, that is you can write down in place of EC by E, that is equal to Q, or EC is equal to Q into E, or you can also write down E0, that is your input, is equal to nothing but the quality factor into the input voltage. So from that you can easily understood what is the quality factor. Okay students, so over here in this also this consideration is given, and in that particular circuit some of the things are given directly, that we are that I am trying to explain you in detail, how this X is equal to XL, EC is equal to IXC into IXL come into the picture. Okay, so over here that is the applied voltage, circuit current, this all discussion has been taken place in this lecture, and how this Q factor will comes into the picture. Okay, and how this XL by R or EC by E comes into the picture and defined as a Q factor, that you can easily understood that from the our video lecture discussion. Okay, so students, whenever you consider this theory, so please go through that equations and please go through with this circuit. This is the practical Q meter, student, who you can see over here, that is the shunt resistance is given, series RLC circuit is considered over here, this is L, R and C, this is the resonant capacitor, this is the circuit Q meter, this L and R is unknown coil, and it is multiplied by the Q meter Q factor Q, this E, that is multiplied by Q, that what we are derived in the equation. Okay, so that is the input voltage, that is multiplied by the Q factor, this is a practical Q meter is given. Okay, so these are the statement that Q reading on the output meter must be multiplied the index setting of the multiplied by Q meter to obtain the actual Q value. Okay, so that's how you can define the Q meter and theory of the Q meter. You can easily understood and easily explain when this such kind of questions is come into the examination. Okay student, thank you very much. So students, finally, as in every lecture, after completion of every lecture I will try to give you a message that please remember turn off the light when it is not required. Okay, so please save the energy, save the electricity. Thank you very much.